हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसलिए आज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम है, टॉपिक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस फ्लावरिंग प्लांट में आप लोगों को मैं डिस्कशन करूंगा है फ्लावर ऑफ द आउटर पार्ट, कैलिक्स, करोला, इंडोशियम एंड गैनोशियम पार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे पॉलिनेशन, types of pollination, self pollination and cross pollination. Different between is very important of the in exam period of the in very important of the figure flower of diagrams. इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए, तैयार करिए और इस वीडियो को करिए। इससे पहले आप लोग तैयार करने से पहले ये नोट्स मैं आपको को लेवल नोट्स तैयार करा रहा हूँ, आप उसमें देखकर उसके नोट बुक भी बना सकते हैं और अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स। तो मिलते हैं आप लोग, फिर हम चलते हैं अपने नोट्स में के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ, उसे अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से उसे स्टडी करिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। आज का चैप्टर है, टॉपिक्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद में उसके पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट के बाद में नेक्स्ट हम लोग रीड करेंगे पॉलिनेशन। व्हाट इज द पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। और नेक्स्ट में आते हैं तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के पार्ट्स में डिफिनेशन पढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग। इन एंजियोस्पर्म यानी ऑल आवृतबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लावरिंग होते हैं, द मेन प्लांट बॉडी द डिप्लॉयड इन नेचर एंड इज नोन एज द स्पोरोफाइट। यानी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के होते हैं और स्पोरोफाइट कंडीशन में होते हैं। The haploid stage in the angiosperm highly reduced and known as the gametophyte। जब इसमें फ्लावर डेवलपमेंट होते हैं तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, माइक्रोस्पोर से हम गैमेट कहते हैं यानी पॉलन ग्रेन। और फीमेल में होता है मेगा स्पोर जिसे हम ओव्यूल ओवरीज होते हैं, जिसे हम पिस्टल कार्पेल में प्रेजेंट होते हैं, उसे गैमेट्स बनते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द फ्लावरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इन प्लांट। फिगर अकॉर्डिंग्स ऑफ द इन फ्लावरिंग प्लांट में देखते हैं तो हमारा क्या एंथर रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिलामेंट्स पार्ट्स एंड स्टेमन पार्ट बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सबसे अपर सरफेस में है, स्टिग्मा होती है, रिसीव ऑफ द पॉलन ग्रेन, स्टाइल होती है, पॉलन ट्यूब ऑफ द इन एंड ओवरी इज द फर्टिलाइज ऑफ द इन फ्रूट डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। But petals of the in attractive of the in pollination and sepals of the supporting of the green color structure and petals of the in different color of the ovule is the center region of the internal and pedicel attached of the stem part of the structure of a typical flower. It is a contains of the four walls in the चक्र होते हैं, the outer walls यानी बाहरी भाग होता है ये। The calyx it is a unit of the called in the sepals. It is a protect of the floral buds हैं in fruit condition. Second part of the inner to the calyx corolla. It is a unit of called in the petals. The petals are colored and the help in the attracting of the insect of for pollination. थर्ड है इन इनर टू द टू करोला क्लोरा पार्ट। क्लोरा के अंदर भाग इंडोशियम होती, इट इज ए मेल सेक्स ऑर्गन एंड इट इज ए यूनिट ऑफ द स्टेमन्स एंड इनर मोस्ट ऑफ द इन गैनोशियम इट इज ए फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड इट इज ए यूनिट आर द कॉल्ड इज पिस्टिल एंड कार्पल्स। ओके, यानी फ्लावर में चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, इंडोशियम और गैनोशियम पार्ट होते हैं। टू ऑफ द सपोर्ट पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला एंड टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, इंडोशियम एंड गैनोशियम पार्ट्स। अब द ए फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल व्हेन कंटेन्स ऑफ द आइदर मेल सेक्स ऑर्गन स्टेम। यदि इसमें मेल फ्लावर पाए जाएं और फीमेल न पाए जाए तो यूनिसेक्सुअल होता है, या फीमेल फ्लावर पाए मेल फ्लावर न पाए तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल प्लांट विद द यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ द पपाया एंड वाटरमेलन दो आपके ऐसे हैं जो मुख्य रूप से यूनिसेक्सुअल प्लांट। इन मोस्ट ऑफ द इन केस फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं एंड हार्माफ्रोडाइट कंडीशन ऑफ
and it contains the both types of the sex organ. In example, bisexual flower, hibiscus, rosa china, and mustard. Male sex organs of the in important character for have first point of the male sex organ or the reproductive part is called of the stamen. A flower a flower may contain many stamens. Second part, these are usually yellowish in color. Each stamen consists of a filaments and anther. Third part, the anther is the swollen structures and it produces male unit called of the pollen grain. Okay. Fourth point is the pollen grain or the produce is the as a result of a meiosis division and therefore these are the haploid structure. Meiosis division होता तो four haploid of the gamete बनते हैं. Our further in the development pollen grain is the rise to the two male of the gamete in the sperm जिसमें दो male gamete होते हैं male germ cell से बनते हैं. For the female of the reproductive parts of the structures in male of the in stamen, filaments, anther and pollen grain. The section cutting of the anther of the pollen grain in pollen grain present of the uh, microsporangia. The female of the reproductive part of the pistil, carpel, thalamus, ovary, style, stigma. The section cutting of the ovary structures. Next part of the in female sex organ of the structures हैं important characters में the first point, the female sex organ are called in the carpel and pistil. A flower may contain one or the more carpels. These are the present in the center of the flower. Second point, each carpel consists a terminal part of called in stigma, a middle elongate part of the in called styles, and the swollen bottom of part of the ovary. Third part of the stigma is sticky nature of the this help in the stigma capture the pollen grain during the pollination. Fourth one, ovary contain the many ovules produce of the female gametes of the important point of the in notes point with it. The important two nodes. Gynosium and endosium each are called in residential walls. A flower must contain at least one of the two walls. When only one endosium present of the flower is called as the staminate, and when only one gynosium present of flower is called of the infestulate. ठीक, ये स्टेमन प्रेजेंट होते हैं स्टेमनेट कहते हैं, गैनोशियम प्रेजेंट होता है पिस्टिलेट कहते हैं. व्हेन द वो दोनों एजेंशियल वॉल प्रेजेंट होते हैं तो सेम फ्लावर इज द कॉल्ड ऑफ द बाइसेक्सुअल एंड hermaphrodite condition. The calyx and corolla are referred to as the non-essential walls since they are not responsible for the formation of gamete and the seeds. Next condition of the various steps involved in the sexual reproduction in flowering plant are the given up below in the pollen grain and formation of male germ cells sperm. The first of the structure stamen contains anther of the microsporangia. All these are structure produce specialized haploid cells known as the pollen grain of the microspore. The pollen grain और the haploid structure. Pollen grain जो होते हैं उन्हें अगुणित संरचना होती है. The format of the meiotic division बफार बनते हैं. Pollen grain now get in the release होते हैं and form from the anther and the reach to the stigma of flower. In this process of the transverse conditions, pollen from the anther to the stigma called of the pollination. Rest of the development of the pollen grain take place after it is a pollination. After the pollination, pollen grain develop on stigma to form male germ cell gamete of the sperm. Next of the definition of the pollination, very important of the transfers of pollen grain from two stigma or corpels is called pollination. It is a two main types, self-pollination and cross-pollination. The first point of the cross-pollination
Self-pollination and cross-pollination. The self-pollination transfer of the pollen from the anther of a flower to the stigma of the same flower or flower of the same plant is called of the self-pollination. It is a present is bisexual flower that is a combinations Viola oxalis or Arachis or stem present of the in self-pollination. Advantage of the self-pollination. First point of the plant does not have to depend on pollinating agency. Second, only a small number of pollen grain are required. Second, the pollination strengthens the better the character of the plants. And next of the in cross pollination. Transfer of pollen from the anther of a flower to the stigma of anther flower belonging to a different plant is known as a cross pollination. It is a mainly found in the unisexual flower but can also occur in bisexual plants. They are many There are many factor or agency which make this transfer easier. Such factor or agency are called pollinating agencies. Some of the pollinating agency air, anemophily, water, hydrophily, insect, entomophily, animals, zoophily, bats of the characterophily, etc. Next are the advantage of the cross pollination. The first of by this we can develop improve the variety for the second point, because of the variation, we obtain health of the seed with better quality, which the sow hybrid beggar. Third point, by cross pollination, disease resistant variety develop, which is the so high resistant power. Fourth of the by this development, a fertile plant take place. Fifth of the abilities of the adopt in the according to the changing environment increase. अब disadvantage क्या है? First point, a high amount of the protoplasm in the production of the essence in nectar extract. Large number of pollen grain in the loss. Third point, for the cross pollination plant need external agents agents such as the wind, water, birds, insect, and human structures. Parental character are not the preserved conditions. Next of the important rule of the difference between which is self of pollination and cross. Very very important question of the board exam and home exam, and a very important role of the in self pollination and cross pollination part. The self pollination first point, the flower are bisexual, but when they are the unisexual, then male and female flower develop on the same plant. Self cross pollination process क्या है? The flower can be bisexual or the unisexual, and male and female flower can be originate on two of the different plants. Next point of the self pollination, male and female part of the flower mature at the same time of the in cross point, male and female part of the in flower mature at different time of the in. Third point of the in self pollination, endosperm and gynoecium are the arranged in such way as the pollen grain easily fall on the stigma, and so no external agent is a requirement. Flower are the unusually attractives. Next are the flower of the brightly in colored and attractive to the attractive pollinator. Some external agent are the required for the transfer of pollen grain on the stigma of the other flower. Next, fourth point, flower do not produce essence of the nectar. In cross-pollination, essence and the nectar are the usually produced. And last of the end point of the flower are the same plants and do not open our or the they are closed. And some such as a arrangement is not of the found in the condition of the ऑल स्टूडेंट इज द कंप्लीट ऑफ द इन नोट्स बना सकते हैं, फेयर वर्क कर सकते हैं एंड इसको रीड करके लर्न कर सकते हैं.
इसलिए इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन करिए, अपने फ्रेंड की हेल्प करके उसको शेयर करिए। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑफ द इन